अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 द सेल की एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम। Answer is endoplasmic reticulum. B. Next MCQ is, the site of enzyme synthesis in cells is. Option is lysosome, smooth endoplasmic reticulum, Golgi bodies, ribosome. Answer is ribosome. Next MCQ is, what are the functions of mitochondria? Options are lipid synthesis, protein synthesis, photosynthesis, cellular respiration. Answer is cellular respiration. Option D. Next MCQ is, a red blood cell and a plant root hair cell both have. Options are cellulose cell wall, hemoglobin, large surface area, nucleus. Answer is large surface area. Next MCQ is, the diagram show cells from different type of tissue. Which type of cell contracts when it is stimulated? अगर आप देखें, जो फिगर ए है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल है, जो बी पे है हमारे पास वो कौन सा है, मसल सेल, सी गार्ड सेल, डी पे न्यूरॉन है। तो हमें पता है जो हमारे पास कंट्रैक्शन की जो एबिलिटी होती है वो हमारे पास होती है मसल सेल के पास। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, which of the cell organelle does not contain DNA? Options are nucleus, lysosome, chloroplast, mitochondria. Answer is option B, lysosome. Next MCQ is, phospholipids are required for cell membrane formation are synthesized in. Options are mitochondria, cytoplasm, endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Answer is option C, endoplasmic reticulum. Next MCQ is, cytoskeleton is an important component of eukaryotic cell. Which of the following statement correctly describes cytoskeleton? Options are, all the cytoskeletal structures are made up of same protein. There is no contractile protein in any cytoskeleton component. Cytoskeleton provides mechanical support and has role in cell division. The entire cytoskeleton is present around the cell membrane. Answer is option C. Cytoskeleton provide mechanical support and has a role in cell division. Next MCQ is, the shape of normal red blood cells is. Options are oval, crescent, biconvex, biconcave. Answer is option D, biconcave. Next MCQ, plastid of different types are correctly represented by photosynthetic, pigmented, food storage and color variety. Option A, chloroplast, leucoplast, chromoplast, chloroplast. Option B, chromoplast, chloroplast and chromoplast, chromoplast and leucoplast and chromoplast. Option C, leucoplast and chloroplast, chromoplast and leucoplast, leucoplast, chloroplast. Option D, chloroplast, chloroplast and chromoplast, leucoplast and chromoplast. Correct is option A. फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट होता है, पिगमेंटेड ल्यूकोप्लास्ट, फूड स्टोरेज क्रोमोप्लास्ट एंड कलर वेराइटी क्लोरोप्लास्ट।
Next MCQ is, which of the following statement correctly represent ribosomes? Options are, they are present only in eukaryotic cell, they are produced in the nucleus then migrate to the cytoplasm where they synthesize protein, they are covered by single membrane, or ribosomes are attached to inner surface of rough endoplasmic reticulum. Correct answer is option B. They are produced in nucleus then migrate to cytoplasm where they synthesize protein. Next is short question answers. First is, why mitochondria are known as powerhouse of cell? Its answer is, mitochondria are known as powerhouse of cell because they are primary organelles responsible for producing adenosine triphosphate ATP, which is the cell's main energy currency. Through a process called cellular respiration, mitochondria generate ATP by breaking down carbohydrates, fats, and sometimes proteins in the presence of oxygen. This ATP provides energy necessary for various cellular functions and activities, including muscle contraction, cellular division, and active transport across cell membrane. Therefore, mitochondria play a crucial role in supplying energy to sustain life processes within the cell. Next question is, what makes red blood cells more suitable for transport of oxygen? Answer is, the combination of their shape, lack of nucleus, hemoglobin content, hemoglobin content, flexibility, and lifespan makes red blood cells highly efficient in transporting oxygen throughout the body's tissues. Next question is, give the modifications of epidermal cells for exchange of gases and B. Absorption of water and minerals. First, exchange of gases. Epidermal cells in plants often undergo modification to facilitate the exchange of gases, primarily carbon dioxide and oxygen, which are essential for photosynthesis and respiration. The main modifications include stomata. These are specialized pores found in the epidermis of leaf and stem. Each stoma is bordered by two guard cells that regulate its opening and closing to control gas exchange and water loss. The presence of stomata allows for the diffusion of gases into and out of leaf. Next is subsidiary cells. Surrounding the stomatal complex, subsidiary cells help support the function of guard cell and regulate the stomatal aperture, thereby influencing gas exchange rate. Next is absorption of water and mineral. Epidermal cells also play a crucial role in absorbing water and mineral from the soil. The modifications for this function include, first of all is root hairs. These are long, slender extensions of epidermal cells that greatly increase the surface area of the root for absorption. Root hairs are in close contact with soil particles, enhancing the uptake of water and dissolved mineral. Next is Casparian strip. This is a band of impermeable material, submarine, found in radial and transverse wall of endodermal cell in root. It forces water and dissolved minerals to pass through the selectively permeable cell membrane of endodermal cells, ensuring uptake is properly regulated. Next is root epidermis. The epidermal cells covering roots may have some modifications like presence of root hairs or absorption cells specialized for nutrient uptake, facilitating efficient absorption of water and minerals. Next question is,
फॉलोइंग डायग्राम शोज अ प्लांट सेल। ये देख सकते हैं हमें एक प्लांट सेल दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास, कीपिंग इन व्यू द पार्ट्स लेबल्ड 1 to 4, answer the following questions. First question is, give the number indicating the structure which controls the cell activity। कह रहा है उस स्ट्रक्चर का नंबर बताएं जो सेल की एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, नेम ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन पार्ट टू। पार्ट टू में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, प्रोसेस हो रहा है, उसका नाम बताएं। तीसरे में है, व्हाट विल हैपन टू सेल इफ पार्ट वन इज रिमूव्ड एंड पार्ट थ्री इज ओवर फिल्ड विद वाटर। कह रहा है कि सेल को क्या होगा अगर हम पार्ट वन रिमूव कर दें और पार्ट थ्री को ओवर फिल कर दें वाटर से। सो फर्स्ट जो था हमारे पास क्वेश्चन वो था, गिव द नंबर इंडिकेटिंग द स्ट्रक्चर विच कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज। तो आप देखें वन वाला अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास लेबल्ड है सेल वॉल। 3 पे हमारे पास लेबल है क्या कहते हैं इसको, वैक्यूल। 4 पे न्यूक्लियस। तो अब कह रहा है कि उस ऑर्गेनेली का नंबर बताएं जो सेल एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। सेल की एक्टिविटीज बच्चों में पता है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, तो वो 4 वाला है। तो इसका आंसर है नंबर 4, न्यूक्लियस। बी पार्ट है हमारे पास, नेम बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन पार्ट टू में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है उसका नाम बताएं। आंसर इज साइटोस्केलेटन डायनेमिक्स। इसमें बच्चों देखें सिंपली जो हमारे पास स्केलेटन है उसको लेबल किया हुआ है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, व्हाट विल हैपन टू सेल इफ पार्ट वन इज रिमूव्ड एंड पार्ट थ्री इज अवर सेल्ड विद वाटर। ये पार्ट वन को अगर हम रिमूव कर दें यानी सेल बार रिमूव कर दें और पार्ट थ्री यानी वैक्यूल को ओवरफिल कर दे वाटर से, तो क्या होगा, आंसर इज सेल विल बर्स्ट, के सेल बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स अ न्यूक्लियस। के नीचे जो डायग्राम है ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, न्यूक्लियस को। क्वेश्चंस दिए हुए हमें चार। ए पार्ट है, नेम द स्ट्रक्चर लेबल्ड ई एंड एफ। जो ई और एफ में लेबल्ड है स्ट्रक्चर्स उनका नाम बताएं। नेक्स्ट पार्ट है, नेम द फंक्शन ऑफ एफ। एफ का फंक्शन बताएं। पार्ट सी है हमारे पास, विच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आर फाउंड बाय ई। ई कौन सी ऑर्गेनेलीज बनाता है। और डी है हमारे पास, व्हाट हैपेंस टू ई ड्यूरिंग सेल डिवीजन। के ई जो पार्ट है उसको उसके साथ क्या होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए पार्ट है, नेम द स्ट्रक्चर लेबल्ड ई एंड एफ। कि जो ई और एफ में लेबल्ड है स्ट्रक्चर्स उनका नाम बताएं। बच्चों जो हमारे पास ई में है वो क्या है, वो है न्यूक्लियोलस। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि न्यूक्लियस के सेंटर में एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है चैप्टर में, वो उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो न्यूक्लियोलस है। और जो एफ में है वो है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस का एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कवरिंग है न्यूक्लियस की, तो वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बी पार्ट है हमारे पास, गिव द फंक्शन ऑफ एफ। जो एफ वाला पार्ट है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन बताएं। तो इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू सेल एंड मेंटेन इट्स शेप। ठीक है, थर्ड है हमारे पास, विच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आर फाउंड बाय ई। के ई वाला कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज बनाता है, राइबोसोमल आरएनए which combines with proteins to form ribosomes। तो ये क्या बनाता है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट हैपेंस टू डी ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ई क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोलस। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियोलस डिस्पेयर हो जाता है फॉर शॉर्ट टाइम। सो आंसर इज कंडेंस इनटू मोर टाइटली कॉइल्ड थ्रेड्स। अच्छा कंडेंस होके क्या, थ्रेड कंडेंस और टाइटली कॉइल्ड थ्रेड्स में कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, पहले वो डिस्पर्स्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, सेल शेप इज रिलेटेड टू सेल फंक्शन। गिव 3 एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। कह रहा है कि जो सेल की शेप होती है वो रिलेटेड होती है इसके फंक्शन की, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स दें। ये हमने पीछे भी पढ़ा कि सेल सेल्फ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह, जैसे हमने पीछे न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स का जिक्र पढ़ा है।
कि उनका जो फंक्शन है वो कंडक्शन है, तो उस हिसाब से उनका स्ट्रक्चर वैसा होता है। अब जब मसल सेल्स उनका काम कंट्रैक्शन है, तो उनका भी स्ट्रक्चर उस हिसाब से क्या लॉन्गेटेड है। ठीक है, तो जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिलेटेड होता है उसके फंक्शन के। तो आंसर है इसका बच्चों, सेल शेप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग फंक्शन ऑफ सेल। Here are three examples illustrating the relationship between cell shape and function. First one is red blood cells, which are also called erythrocytes. इनकी शेप होती है बाइकनकेव डिस्क शेप, फंक्शन एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। एक्सप्लेनेशन क्या है अब कि जो बाइकनकेव शेप, द बाइकनकेव शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स मैक्सिमाइज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, allowing for rapid diffusion of gases across the cell membrane. This shape also enables flexibility, facilitating passage through narrow capillaries. Next are neurons or nerve cells, shape elongated with long extensions, axon and dendrite function, transmission of electrical signal, nerve impulses. Explanation: the elongated shape of neuron facilitates the transmission of electric signal over long distances. Axons transmit signal away from cell body, while dendrites receive signal from neuron or sensory receptor. This morphology allows neuron to efficiently communicate with other cells in the nervous system. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एपिथेलियल सेल्स। शेप वेरिड शेप्स डिपेंडिंग ऑन लोकेशन की शेप वेरिड होती है लोकेशन की बेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल स्क्वेमस भी होते हैं, क्यूबाइडल, कॉलमर। फंक्शन क्या है इनका? प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। एक्सप्लेनेशन: द शेप ऑफ एपिथेलियल सेल इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन इन द टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल with their flat shape provide a thin barrier for diffusion. Cuboidal and columnar epithelial cells involved in absorption and secretion in organs like the kidney, tubules, and digestive tract, where their shape facilitates efficient transport and processing of substances. In each of these examples, the specific shape of the cell is adapted to perform its specialized function effectively, demonstrating the close relationship between cell morphology and function in biology. Next question is question number 7, which is plasma membrane has two main components according to fluid mosaic model. Which component represents fluid and which component represents mosaic? कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उन दोनों कंपोनेंट्स कौन सा जो कंपोनेंट है वो फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा मोज़ेक को? Answer is according to fluid mosaic model of plasma membrane fluid. The lipid bilayer component of plasma membrane represents the fluid part. Lipid molecule, primarily phospholipid, form a flexible bilayer in which other molecules such as proteins can move laterally. Next is mosaic. The proteins embedded within or associated with lipid bilayer represent the mosaic part. These proteins are diverse in structure and function, creating a mosaic pattern within the lipid bilayer. They may serve as channels for transport, receptor for signaling, enzyme for catalyzing reactions, or structural components. In summary, the plasma membrane is described as a fluid mosaic model because the lipid bilayer provides a fluid environment due to the movement of lipid molecules, while the proteins embedded within it create a mosaic of diverse functions and structures. Next question is question number 8, which is select the structures which are present in all cells of all kingdom. Write one function of each selected structure. Answer is cell membrane, nucleus, chromosome, cytoplasm, ribosome, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, centriole, cilia, flagella, cell wall, cytoskeleton, vacuole, and plastids. Several structures are present in all cells across all kingdom of life. Here are some examples along with their function. Cell membrane or plasma membrane function: regulate the passage of substance into and out of cell, maintain cell shape, and facilitate cell to cell communication. Next are ribosomes. Function क्या होता है इनका? Site of protein synthesis where messenger RNA is translated into polypeptide chain.
Next is cytoplasm. Its function is to provide a medium for biochemical reactions which are occurring within the cell, suspends organelles, and facilitates intracellular transport. Next is DNA or chromosome. Its function is contains genetic information in the form of genes which encode instructions for building proteins and regulating cellular activities. Next organelle is mitochondria. Its function is generates ATP through cellular respiration, providing energy for cellular activity. Next organelle is cytoskeleton. Its function is provide structural support to the cell, maintain cell shape, and facilitate cell movement and division. Next organelle is cell wall in plants, fungi, and prokaryotes. Function provides structural support and protection, maintains cell shape, and prevents excessive uptake of water. These structures are fundamental to the basic function and characteristics of cells across the organism, reflecting their essential roles in cellular processes, structures, and function. Next question is question number 9, which is which cells in animals and plants do not have a nucleus? How do these cells perform their functions without nucleus? Its answer is in animals, mature red blood cells, erythrocytes, do not have nucleus. In plants, mature sieve tube elements and campanile cells in the phloem of flowering plants also lack a nucleus. Here's how these cells perform their function without a nucleus. First of all, red blood cells, erythrocytes. Function: erythrocytes are specialized for oxygen transport without nucleus. Lack of a nucleus allows more space for hemoglobin, the protein that binds oxygen. This maximizes the oxygen carry capacity of cell. While mature red blood cells cannot divide or synthesize new proteins, including hemoglobin, their main function, transporting oxygen, is supported by their shape, biconcave disc, and efficient gas exchange characteristics. Next is sieve tube elements and companion cells in plants. Their function is sieve tube elements transport organic molecules such as sugar throughout the plant, while companion cells support and maintain the function of sieve tube elements. The absence of a nucleus in mature sieve tube elements reduces energy expenditure on maintaining cellular processes and allows for a more streamlined pathway for efficient transport of nutrients. Companion cells, which have a nucleus and support the sieve tube elements, provide the necessary proteins and other molecules needed for their function. In both cases, these cells rely on adaptations that allow them to prioritize their specialized functions, efficient oxygen transport in erythrocytes, and effective nutrient transport in sieve tube elements despite the absence of a nucleus for cellular maintenance and protein synthesis. Next question is question number 10, which is unripe oranges are green in color. After ripening, their color changes. Suggest which organelle number changed in them during ripening. Answer is during the ripening of oranges, the color change from green to orange is primarily due to changes in the number and activity of chromoplasts. Chromoplasts are organelles responsible for storing pigments, particularly carotenoids such as beta-carotene and lycopene, which give fruits their characteristic colors. In unripe oranges, chloroplasts are abundant and chlorophyll and contain chlorophyll, which give them a green color. As the oranges ripen, chloroplasts are converted into chromoplasts through processes that involve degradation of chlorophyll and synthesis of carotenoid pigment. These chromoplasts accumulate
and intensify in color, resulting in the vibrant orange color of ripe oranges. Therefore, the number and activity of chromoplasts increase during the ripening process of oranges, leading to the visible color change from green to orange. Next question is question number 11, which is which organelles are abundant in the salivary gland cell? Explain. Answer is salivary gland cells are specialized for secretion and therefore they are rich in organelles such as Golgi apparatus, secretory vesicle, mitochondria, rough endoplasmic reticulum, and lysosomes. These organelles work together to synthesize, package, and secrete saliva components efficiently. सो स्टूडेंट्स हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं होपफुली आपको समझ आ गए होंगे इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक यू